हेलो एवरीवन, वेलकम टू Gitishree Study Zone। तो आज आम इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन पढ़ा जूलॉजी प्रीवियस क्लास रे आम ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो चैप्टर पढ़ुले। तो तार गोटे इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन आज आम डिस्कशन करबा। तो आज गिव एन अकाउंट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल। मनुष्य माने होचंती कोन यूनिसेक्सुअल। तार यूनिसेक्सुअल बोथ मेल भी थांते और फीमेल्स भी अछंती। It means males and females have distinct and separate reproductive organs. एर अर्थ कौन मेल और फीमेल मानकर डिस्टिंक्ट माने अलग अलग सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थाए। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मैन व्हिच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस होची ह्यूमन टेस्टिस होची मैन रो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये कि मेल गैमेट स्पर्म को प्रोड्यूस करथाए and also secrete male sex hormone एवं मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करता है। Other structures known as accessory male reproductive organs are concerned with sperm transport and its deposition in the female genital tract for possible fertilization. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होची टेस्टिस जहाँ की मेल रिप्रोडक्टिव में जहाँ की मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जहाँ की मेल गैमेट स्पर्म को प्रोड्यूस करता है एंड करता है ना सेक्स हार्मोन को मध्य सिक्रेट करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को छाड़ी देले बाकी जहाँ अच्छी जो ऑर्गन अच्छी जोटा कि रिप्रोडक्शन में सहायता करे और स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन करता है एवं फीमेल जेनिटल रे स्पर्म रो डिपोजिशन करथाए बा डिपोजिशन करिबारे सहायता करथाए से ऑर्गन गुडी को एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाए। ताले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो मैन रो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गुडी को फॉलोइंग पार्ट गुडी को कंसिस्ट करते हैं धारण करते हैं। फर्स्ट होची टेस्टिस। टेस्टिस होची कोन आमे पढ़ले एबे जे सेटा कोन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस विषय कोन आमे जानिबा। इन मैन देयर आर ए पेयर ऑफ टेस्टिस located in the pouch like scrotum. Located in the pouch like scrotum. मैन रो गोटे पेयर टेस्टिस थाए जहा कि पाउच परिके देखा जायतबा स्क्रोटम रे थाए। Attached to the wall of scrotal sac by a small fold called gubernaculum. Gubernaculum द्वारा ये जो टेस्टिस टा कहा भीतर थाए ना पाउच परी देखा जाउथबा स्क्रोटम भितरे। अब ये स्क्रोटम टा स्क्रोटल सैक और वॉल रे अटैच हे थे कहा द्वारा ना गुबर्नाकुलम द्वारा। Then each testis is solid and oval in shape. प्रत्येक टेस्टिस टा ओवल शेप रो measuring about 4 to 5 cm in length. यार लेंथ कौन ना 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर and 10 to 15 grams in weight. यार वेट होची 10 ରୁ 15 ग्राम। Each testis communicates with the abdominal cavity by a narrow passage called inguinal canal. Each testis communicates with the abdominal cavity by a narrow passage called inguinal canal. प्रत्येक टेस्टिस इंग्विनल कैनाल द्वारा abdominal cavity सहित अटैच होइथांती। Testis communicates with the abdominal cavity by a narrow passage called inguinal canal. It is held in position within the scrotal sac by means of a compact cord like inguinal cord or spermatic cord. टेस्टिस कोड थाए ना स्क्रोटल सैक भीतर थाए और से स्क्रोटल सैक टा गोटे कंपैक्ट कॉर्ड लाइक रो कॉल्ड इंग्विनल कॉर्ड और स्पर्मेटिक कॉर्ड। Histology of testis. Each testis is covered by a covering called tunica albuginea and internally it has long coiled tubules called seminiferous tubules. प्रत्येक टेस्टिस tunica albuginea द्वारा कवर होइथांती and inertially and internally एवं तार भीतर आवरण कथा कह जाय इंटरनली एवं तार भीतर आवरण अनुसार it has long coiled tubules. यार long coiled tubule थाए माने कॉइल टिबुल माने पाइप गुडी के गुडी हे गेले जेपर देखा जाए ठीक सेमती कॉइल टिबुल थाए जहा को कह जाय सेमिनिफेरस टिबुल्स। These tubules are internally lined with a single layer of germinal epithelium. These tubules माने seminiferous tubules
are internally lined with a single layer of germinal epithelium. Its cells give rise to spermatogonia from which sperms are produced. Spermatogonia धीरे धीरे डेवलप होगी स्पर्म को फॉर्म होता है. In between the seminiferous tubules, interstitial cells or Leydig cells are present which secrete male sex hormone testosterone. तो पिलाମାନେ ଏଇଟା short question तुमर आसीबो. Leydig cell को sex hormone को secrete करता है. Answer होगा testosterone. This hormone is responsible for the development and maintenance of secondary sexual characters. Secondary sexual character को maintain करिया पे एवं ताको develop करिया पे testosterone help करता है. ताले पिलाମାନେ एटा दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन हमें पाइले. बट लेडिक सेल कौन प्रोड्यूस करता है बा कौन सिक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन पे रेस्पॉन्सिबल? आंसर है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. All the seminiferous tubules converge to the posterior part of the testis to form a network of small tubules called retitestis. Retitestis हो जोटे जाल टाइप रो जाल परिके देखा जाए तो ताको कहते हैं retitestis. तो यार अर्थ all seminiferous tubules सब seminiferous tubules गुड़ी को converge होई थांती एकठी है कि posterior part testis रो posterior part रे गोटे नेटवर्क टाइप रो माने गोटे जाल टाइप रो स्ट्रक्चर को फॉर्म करथांती ताको कहा जे रेटिटेस्टिस. मैं आउथरे कहू जे सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स गुडी को एकाठी हे कि टेस्टिस रो पोस्टीरियर पार्ट रे गोटे जाल टाइप रो स्ट्रक्चर को फॉर्म करथांती ताहा को कहा जे रेटिटेस्टिस. फ्रॉम रेटिटेस्टिस about 15 to 20 slender ducts called vasa efferentia arise and finally merge into a single muscular duct called vas deferens. पिलाମାନେ तुमने जदि न बुझी पारुछ लॉन्ग क्वेश्चन तार मते कमेंट सेक्शन रे कहिले मु रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ए सब रो मते पिक्चर नै आसी पिक्चर आनी कि तुम मानको बुझाई देबी. देन आसला एपिडाइडिमिस 2 रे फर्स्ट हमें पढ़ले कोन एठारे फर्स्ट हमें पढ़थिले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो फर्स्ट पार्ट होची टेस्टिस जोटे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. बाकी सब एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी सब एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गुडी को. सेकेंड होची एपिडाइडिमिस. एपिडाइडिमिस तले कोठी थाए बिहाइंड ईच टेस्टिस इज एपिडाइडिमिस. प्रत्येक टेस्टिस रो पछ को कहा जाए पछ भागटा को कहा जाए एपिडाइडिमिस. इट इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुल्स अबाउट 6 meters in length. एपिडाइडिमिस गोटे लॉन्ग कॉइल्ड माने मुड़ी हे के थाए 6 मीटर लेंथ तार जोटे कि मोड़ी हे के थाए and partially encircles the testis. It has 3 parts. Epididymis रो 3टा पार्ट थाए. Caput epididymis. It is the top part connected with the seminiferous tubules. Caput epididymis टा होची टॉप पार्ट जहा कि seminiferous tubules सहित कनेक्ट हे थाए. सेकंड होची corpus epididymis. Corpus epididymis कोन? It is the middle part. It is the middle part connected with the seminiferous tubules. देखा कापुट एपिडाइडिमिस आउ कॉर्पस एपिडाइडिमिस दीटा को सेमिनिफेरस ट्यूबुल सहित कनेक्ट होइथांती किंतु टॉप पार्ट को कहा जाए कापुट एपिडाइडिमिस एंड मिडिल पार्ट को कहा जाउची कॉर्पस एपिडाइडिमिस. थर्ड रे होची काउडा एपिडाइडिमिस. इट इज द बॉटम पार्ट कनेक्टेड विथ द भास डिफरेंसेस. काउडा एपिडाइडिमिस सबुठार लोअर पार्ट जहा कि भास डिफरेंस सहित कनेक्ट होइथाय. Epididymis serves as a duct for the passage of sperms from testis to vas deferens. Epididymis कौन करे? Epididymis testis रो vas deferens testis ठारो vas deferens जाए स्पर्म को नहीं थाए बा स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा पे से हेल्प करता है. कोड को जाए ना टेस्टिस ठारो vas deferens जाए स्पर्म ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करता है. स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाई डक्ट भलिया काम करता है. इट स्टोर्स स्पर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द सेमिनल फ्लूइड. एपिडाइडिमिस रे स्पर्म स्टोर होता है एवं एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सेमिनल फ्लूइड. इट स्टोर्स स्पर्म एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सेमिनल फ्लूइड. तो एपिडाइडिमिस रे कौन है? एपिडाइडिमिस टा एपिडाइडिमिस रे स्पर्म स्टोर हेकी रहता है. पिला माने एठारे हमें 3टा शॉर्ट क्वेश्चन पाइले. तो पिला माने हमें एठारे 3टा शॉर्ट क्वेश्चन पाइले.
फास्ट होची लेडिक सेल कौन करे, लेडिक सेल को हार्मोन सिक्रेट करे, आंसर हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकेंड होची सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पई क्यों हार्मोन हेल्प करे, आंसर हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। थर्ड रे होची स्पर्म स्टोर है कि केउंट थाए, देन आसिला भास्ट डिफरेंसेस। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब which leaves the base of epididymis on each side of the scrotal sac through a passage called inguinal canal to enter into the abdominal cavity. The vast differences कौन, गोटे muscular tube which leaves the base of the epididymis on each side of the scrotal sac, कहा scrotal sac through a passage called inguinal canal to enter into the abdominal cavity. The sperms are carried by vas deferentia to be discharged at a time of ejaculation. Ejaculation time रे sperm गुड़िको vas deferentia द्वारा, तो ejaculation time रे sperm गुड़िको vas deferentia द्वारा discharge होइथांती। ejaculatory duct, fourth रे होची ejaculatory duct. It is a short duct formed by the union of vas deferences. तो ejaculatory duct कौन, इजाकुलेटरी होची डॉट गोटे शॉर्ट डॉट गोटे छोटो डॉट जहा कि भास डिफरेंसेस मानकर यूनियन रे माने भास डिफरेंसेस गुडी को एकठी हे कि इजाकुलेटर डॉट को फॉर्म करथांती एंड द डॉट ऑफ द सेमिनल वेसिकल। So it is a short duct formed by the union of vas deferences and the duct of the seminal vesicle. तो पिला माने vas deferences एकठी हे कि एवं सेमिनल वेसिकल डक्ट गुडी को एकठी हे कि इजाकुलेटर डक्ट को फॉर्म करथानी। द इजाकुलेटर डक्ट of both the sides open into urethra and urinogenital canal. Urethra कौन, the urethra originates from the urinary bladder and travels through the penis. The urethra कौन, urethra originate होची, urethra बाहरी ची urinary bladder रो, माने urinary bladder रो गोटे पाइप टाइप रो बाहरी ची ताको को urethra, तो से ओरिजिनेट होची माने बाहरी ची urinary bladder रो and travels through the penis एवं penis through रे penis भीतर देखि जाई छी and opens to the outside at its tip, माने penis रो outside रे एटा बाहरी ची माने ओपन हे छी। आउतरे कहूची urethra urinary bladder रो बाहरी छी एवं पेनिस थ्रू रे ट्रैवल करछि माने पेनिस थ्रू रे जाई छी, जाई कि पेनिस रो टिप रे ओपन हे छी। It serves as a common passage for the flow of urine and semen. Urine और semen urethra द्वारा discharge होचंती। Then आसला penis. It is the male copulatory organ. Penis होची male copulatory organ. It is a single muscular structure covered with a thin but loose skin. तो penis होची गोटे male copulatory organ. It is a single muscular structure. एटा होची गोटे single muscular structure जहा कि गोटे पतला लूज स्किन, पतला ढिला स्किन। जदि न बुझी पाछ तार मते कमेंट सेक्शन में कहबो, काहे कि एटा तुमरो बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अछि। केवल एटा प्लस 2 रे नुहे, तुम मन जदि मेडिकल साइंस फ्यूचर रे पढिबा किंबा प्लस 3 भी करिवो जूलॉजी रे, तारे तुम मानकर एटा ही लॉन्ग क्वेश्चन पुन थरे रिपीट हबो। Its terminal sensitive part is called glans penis. Its terminal sensitive part penis रो terminal sensitive part को कहा जाए glans penis. The fold of skin covering the glans is called prepuce. जोटी स्किन टा फोल्ड होता है और ग्लैंड्स को कवर करता है ताको कहा जाए prepuce. Histologically, the penis is made up of 3 erectile cords of spongy tissue. Spongy tissue माने कौन, sponge type रो. 2 of the cords which lie dorsally are called corpora cavernosa and the third one lying ventrally is called corpus spongiosum. The dorsally माने कौन, तार ऊपर भाग रे जोटा अछि 2 cords which lie dorsally, तो दीटा कॉर्ड जोटा कि ऊपर भाग रे थाए ताको कहा जाए corpora cavernosa
एंड द थर्ड वन लाइंग वेंट्रल जहाँकि तल भाग थाए उदर थाए से कहुए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम द एम्प्टी साइनसेस ऑफ द कॉर्ड्स आर फिल्ड विथ ब्लड व्हेन द पेनिस इज इरेक्टेड देखो एम्प्टी साइनसेस गुड़िक ब्लड द्वारा फिल होता है देन 7 होची accessory glands the following glands are associated with the male reproductive system first होची seminal vesicle these are two muscular convoluted pouch-like structures lying between the urinary bladder the seminal vesicle गुड़िक दो muscular convoluted pouch-like structure से गुड़िक होची कोन pouch-like structure होइथांती जहाँ कि urinary bladder मध्य रे थाए they secrete a thick fluid which forms most of the semen से गुड़िक ताले seminal vesicle गोटे thick fluid माने मोटा बहली आकार fluid secrete करता है it contains nutrients like fructose vitamins mucose and large amount of prostaglandins for the nutrition and protection of sperm second होची prostate gland it is a lobular compact gland located below the urinary bladder तो urinary bladder तलरे गोटे lobular compact gland देखा जाए जहाँ को कहा जाए prostate gland secretes a thin milky white alkaline fluid prostate gland गोटे पतला milky white alkaline fluid को secrete करता है जहाँ की secrete करता है which neutralize the acidity in the semen or increases the survival of sperms and chance of fertilization जहाँ की semen रो acidity को neutralize करे and fertilization और sperm रो survival माने sperm टा नष्ट नहीं बंचिबा पईका बंचिबार चांस को बढ़ाई दे थाए थर्ड रे होची bulbourethral gland और Cowper's gland bulbourethral gland को Cowper's gland मध्ये कहा जाए these are two small pea-sized glands जो गुड़िक छोट pea-sized रो gland होइथांती below the prostate gland रो तले थांती they secrete alkaline fluid which has lubricating action थाए it also neutralizes the acidity of urethra and vagina urethra and vagina रो acidity को bulbourethral gland रो secrete होउथबा alkaline fluid neutralizes करे कार पिला माने आज क्लास एतिक थाओ नेक्स्ट क्लास रे हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िबा तो पिला माने तुम मन भीतर जते कोडी के न बुझि पाछ त मते कमेंट सेक्शन में कहो